Everyone, welcome to my channel English Grammar with Shikha Gaur, and it's been a long time that I've posted any video. So today we are starting with our new series, that is foundation series, and for today the topic is nouns. And first of all, I would like to begin with the definition and the meaning of noun. After that, we will move on to the kinds of noun. First is, what is noun? Noun is a naming word, something that gives a name. Like वो जो नेम है वो किसका हो सकता है? किसी पर्सन का नेम हो सकता है, थिंग का हो सकता है, प्लेस का हो सकता है, एनिमल्स, प्रोसेसेस, फीलिंग्स. सो नाउन्स क्या हैं? इट इज़ द नेम of a person, place, animal, thing, processes, or feelings. So this is the basic introduction of noun. After that, I would like to move on the kinds of noun. First is proper noun. What is a proper noun? Proper noun is the particular name of a person, place, thing, etc. So what is a proper noun? Proper noun का मतलब होता है कि किसी भी एक्चुअल और स्पेसिफिक और अ पर्टिकुलर पर्सन का नेम, मतलब कि जो पर्सन है ओनली दैट पर्सन इज, मतलब ये जर्नल नहीं होता, बट इट इज़ पर्टिकुलर एंड स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, etc. Next is common noun. What is a common noun? Common noun is the journal name given to the person, place, thing, living beings. In living beings, animals can also come, etc. After that is collective noun. What is a collective noun? Collective noun is the group of the common nouns. मतलब जो common nouns हैं, जो journal names हैं, places के, person के, things, living beings, animals, इनके अगर groups अगर बनाए जाए वो होता है collective noun. एंड कलेक्टिव नाउन में जो जर्नल नेम है, जर्नल नेम जो है इनका कॉमन नाउन्स का, उनको जब हम उनका नंबर भी चेंज हो सकता है, मतलब उसको हम सिंगुलर टू प्लूरल हम बना सकते हैं. नेक्स्ट इज मटीरियल नाउन. मटीरियल नाउन इज स्पेसिफिकली बेस्ड ऑन द सब्सटेंसेस या मटीरियल विच आर टेकन फ्रॉम द नेचर, एंड आफ्टर यूजिंग देम, उन मटीरियल को यूज़ करके वी मेक डिफरेंट थिंग्स. Those are material nouns, and basically these material nouns can come in the category of countable as well as uncountable nouns. After that is abstract nouns. Abstract noun is basically based on the emotions, feelings, qualities, ideas और states. मतलब जो भी हमारे emotions हैं, feelings हैं, उनके लिए जो particular words use होते हैं या उनकी जो qualities हैं, उन्हें बोला जाता है abstract noun. So this was today's first video, which was based on nouns and which is coming in our foundation series. This was the first topic, and after this we will move on to our next topic, that is pronoun. And like this we will move on to different parts of speeches and other things related to grammar. So thank you for today's video, and we will be moving on to our other topics of English grammar soon. So that's it. Thank you so much.